So now lipids हमारे पास एक type of macromolecule होता है, ठीक है? And we have studied that there are basically differences between a polymer and a macromolecule. और वो क्या होता है that all polymers are basically your macromolecule. Why? Because polymers आपके smaller, simpler subunits से combine होकर बनते हैं. यानी हमारे पास एक small monomer होता है and many small monomers basically combine to form a polymer. So polymer is a macromolecule. Polymer is a large substance. However, अगर हम बात करें हमारे lipids की, तो lipids के लिए हम कहते हैं that lipids are macromolecules, but lipids are not polymer. And we have discussed this difference, so I would want anybody of you to tell me or give me an answer that why a lipid is not a polymer, but it is still considered as a macromolecule. We discussed this in our very first class of biological molecules. So if anybody of you can recall this. Okay, yes. So basically, हमारे पास जो lipids होते हैं, they do not have any repeating units. Okay, that's correct. Now, as we move forward, हमारे पास lipids का हमने discuss कर लिया कि वो macromolecules हैं. Why? Because lipids are made up of some smaller units. But because वो smaller units में एक repetitive pattern नहीं है, यानी same molecules और same atoms आपस में combine होकर एक polymer नहीं, एक polymer या एक macromolecule नहीं बना रहे हैं, इस वजह से we are not classifying lipids as polymers. Now, lipids हमारे पास organic compounds होते हैं which are insoluble in water, but they are soluble in organic solvents. यानी water में if I would mix a lipid, for example, बहुत common सी example है that हम अपने घरों में देखते हैं, that if we mix oils and we mix water, तो जो lipid और sorry जो हमारे पास oils हैं, oils basically क्या है? Oils are basically our lipids, okay? So basically our lipids are oils, and if we add oil to water, हमारे पास जो water और oil है वो कभी mix नहीं होगा. They're immiscible liquids. Why? Because हमारे पास जो lipids होते हैं वो insoluble in water होते हैं. So whenever you add water to lipids, they would separate. They would not dissolve together. However, if you add the lipids to any organic solvent such as alcohol, जिसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं इथेनॉल में अगर हम ऐड करें लिपिड्स को, so our lipids would be soluble. Now, the lipids that we're concerned with are basically triglycerides and phospholipids. These are the two types of lipids that we have to study for our syllabus. So basically, when we come to triglyceride, now, हमारे पास triglyceride basically क्या है? Triglyceride is actually an ester. Now, अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी भी है, and I'm pretty sure O levels में तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, so can anybody of you recall what is an ester? कौन से दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर हमारे पास एक एस्टर बना रहे होते हैं, या एस्टर का जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है? If anybody of you can answer that. What is the functional group of an ester? Or Muskan, you're close. Muskan and yes, you can say COOC, but we actually only say कि एस्टर का हमारे पास हम अपना फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं C डबल बॉन्ड O या फिर OCO. Okay. Now, yes, carboxylic acid and alcohol combine together to give you ester. Now, basically हमारे पास COOC हम क्यों नहीं लिखते हैं? Made from alcoholic, yes. You are also right. All three of you have given the correct answers. तो हमारे पास basically हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास COO का खाली हम इसको consider करते हैं as our ester functional group. So COOC कहना गलत नहीं होगा, but general जो expression होता है ester functional group का वो ये होता है. And we'll just in a bit understand कि ये हमारे पास ester linkage बन कैसे रही होती है. So now, we have triglycerides. Now, triglycerides are our most commonly found lipids, ठीक है? And how are they made up, or what is their structure, what is their chemistry? Let's look at that. So, triglycerides are made up of 3 molecules of fatty acids and 1 molecule of glycerol. Now, हमारे पास acids. Acid functional group क्या होता है? This is your acid functional group. This right here is your acid functional group. And alcohol. Alcohol का क्या functional group होता है? Alcohol का functional group होता है OH. Now,
हमारे पास बेसिकली ट्राइग्लिसराइड कैसे बनते हैं, दैट वी हैव थ्री फैटी एसिड चेन्स which are combining with one glycerol molecule. And a glycerol molecule basically is a trihydroxy alcohol. It is an alcohol. हमने जो अब तक alcohols पढ़े हैं उनमें हमने अक्सर देखा होता है कि हमारे पास एक functional group होता है, right? But it is possible that in one hydrocarbon chain more than one functional group is present. For example, let's look at the structure of glycerol. This is the structure of glycerol in front of you. So let's understand and decode this structure. So this is your hydrocarbon chain. ये आपकी hydrocarbon chain है. And if you notice, there are a total of 3 OH groups, 3 alcohol functional groups present on it. So we can say that this is a trihydroxy alcohol. Why? Because there are 3 hydroxyl groups or alcohol groups present on it. So this is a trihydroxyl alcohol. Now, हमारे पास basically functional groups interact करते हैं जब हमारे पास reactions हो रहे होते हैं. So हमारे पास alcohol के पास कितने glycerol के पास कितने alcohol functional groups हैं? It has 1, 2 and 3 alcohol functional groups, right? So हमारे पास एक ester linkage के लिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक acidic group होना चाहिए, यानी हमारे पास एक COOH ग्रुप होना चाहिए और एक हमारे पास क्या होना चाहिए, OH ग्रुप होना चाहिए. So now when they will combine, और वो किस तरह से combine करते हैं, let me just give you a general. तो इनका जो combination होता है वो ये होता है that a water molecule is removed and this basically forms a bond. तो हमारे पास होता ये है that water is lost, the acid loses OH and the alcohol loses O, and they combine in this manner. And this is your ester. Now, हमारे लिए एक ester form करने के लिए we need one carboxyl group or one acidic group, and we need one hydroxyl group. Now, in a glycerol molecule, how many OH groups can you see? You can observe that there are 3 OH groups. So if one OH can form one ester bond, so 3 OHs can form 3 ester bonds, right? So basically, that is why triglycerides are given the name triglycerides. Why? Because a single glyceride has one ester bond. A glyceride is basically an ester formed by one fatty acid when it combines with with glycerol, right? So if 3 esters are being formed by the combination of a fatty acid with glycerol, तो हमारे पास 3 glycerides form हो रहे हैं, and 3 का जो हमारे पास prefix होता है वो tri होता है, and therefore triglycerides are called triglycerides. Why? Because they're forming 3 ester bonds. Correct? Any questions so far? Now, moving forward, let's understand something about saturated and unsaturated fatty acids. तो हम सबको पता है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स basically are those organic molecules which have carbon and hydrogen present in them, right? तो हमारे पास जो पूरी organic chemistry है, it is majorly concerned with what? Our hydrocarbons. Now, we know that carbon is a tetravalent element. And what do I mean by tetravalent? It can form 4 bonds, right? So, now, if all the carbon atoms are forming 4 bonds with their adjacent atoms, they are called saturated hydrocarbons. और अगर हम fatty acids के point of view से बात करें, so if all the carbon-carbon bonds in our hydrocarbon chain are single bonds of carbon, then that particular fatty acid would be called a saturated fatty acid. On the contrary, if a double bond is present, that means that हमारे पास वो जो hydrocarbon है वो unsaturated है. Why? Because carbon की जो valency होती है वो 4 की होती है. So it basically would be saturated. Saturated का मतलब क्या होता है? That completely present. Completely present नहीं. For example, एक saturated solution क्या होती है? जिसमें maximum amount of solute present होता है water के अंदर.
सिमिलरली सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जब मैक्सिमम कैपेसिटी किसी चीज की हो, वो मैक्सिमम कैपेसिटी फुलफिल हो रही हो. So the maximum capacity of carbon to form bonds is what? It is basically 4. But in unsaturated hydrocarbons or in unsaturated organic molecules, हमारे पास कार्बन 3 bonds form कर रहा होता है. Why? Because वो अपने adjacent carbon से double bond कर रहा होता है. No, it is forming 4 bonds. यहाँ पर हमारे पास 4 bonds ही बन रहे हैं. 4. But हमारे पास एक वक्त में carbon atom can bond to 4 atoms or 4 different groups of atoms. Over here, it is bonding to 1, 2 and 3 atoms. So because ये complete capacity जो एक carbon के पास है to bond with different atoms or to bond with different groups of atoms, वो fulfill नहीं हो रही होती, इस वजह से we call them unsaturated. Okay? So अगर हमारे पास खाली पूरी fatty acid chain में, for example, it's a fatty acid chain of 14 carbon molecules. हमारे पास 14 carbons की fatty acid chain है, and उस 14 carbon की fatty acid chain में सिर्फ एक double bond carbon का present है. So that type of a compound or that type of a fatty acid is basically called a monounsaturated fatty acid. Why? Because it is only having one unsaturated carbon. Okay? One unsaturated carbon bond. But if there are more than one double bond present, for example, there are 3 double bonds present in this 14 carbon chain, then it is a polyunsaturated fatty acid. Why? Because there are more bonds, more unsaturated carbon-carbon bonds. So if there is one bond, one double bond in our carbon chain, then it would be monounsaturated. And if there is more than one double bond present, then it would be a polyunsaturated fatty acid chain. Now, let's revisit the concept that why why our fatty acids or why our lipids are concerned not as polymers but as macromolecules. Because हमारे पास, for example, there is no limit as of कौन सा कितने amount of carbons की एक fatty acid chain हो सकती है. Why? For example, हम fatty acids की बात नहीं करते, हम लोग थोड़ी देर के लिए सिर्फ carboxylic acids को डिस्कस करते हैं. हम लोग ऐसा करते हैं that let me tell you one thing. हमारे पास let's take an example of ethanoic acid, and then let's write pentanoic acid, then heptanoic acid. Now, ethanoic acid has how many carbons? It would have 2 carbons. Pentanoic acid would be having 5 carbons, and heptanoic acid would be having 7 carbons. Now, a fatty acid or a carboxylic acid can have numerous amounts of carbons. 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 14, 15, 16, 17, 18. And we'll just see some of the fatty acids just in a while. But कोई limit नहीं है या कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है जो बताए कि यहाँ पर हमारे पास जब एस्टर लिंकेज फॉर्म हो रही होगी, जब ग्लिसरॉल के साथ कोई भी फैटी एसिड चेन आकर अटैच करी होगी, उसके कितने कार्बन एटम्स होंगे. Subsequently, it is also possible that with the first OH, a 7 carbon fatty acid chain has made a bond. Then with the second OH and 11 carbon chain, 11 कार्बन वाली फैटी एसिड आकर बॉन्ड कर जाए, और थर्ड के साथ फॉर एग्जांपल 12 कार्बन चेन की फैटी एसिड आकर बॉन्ड कर जाए. सो आई वुड सी दैट ओवर हियर मेरे पास 7 कार्बन्स हैं, इधर मेरे पास 11 है, इधर मेरे पास 12 है. सो एक रिपीटिंग यूनिट नहीं है. रिपीटिंग यूनिट तो तब होगा जब पूरा मॉलिक्यूल में आई कैन आइडेंटिफाई अ रिपीटिंग पैटर्न. But if there are different fatty acids bonded to every individual hydroxyl group of the glycerol, then obviously मेरे पास एक repeating pattern नहीं बनेगा. And usually यही होता है कि हमारे पास जो fatty acids होते हैं वो different होते हैं, वो different carbon numbers के साथ होते हैं, तो obviously उनका जो structural, molecular और displayed formula है that is different. That is why our lipids are not considered as polymers, because जो हमारे पास number of carbon atoms of a fatty acid chain है वो vary कर सकता है.
and therefore हमारे पास एक repeating pattern observable नहीं होता. Is this clear so far? Now, let's see कि हमारे पास जो fatty acids होते हैं, let's see हमारे पास saturated fatty acids as well as unsaturated fatty acids वो skeletal formula में कैसे लिखे जाते हैं. Now, what is a skeletal formula? Let me write a 12 carbon fatty acid for you. Now, this is my carboxyl group. Then 1, 2, 4, 5, 6, 7. ओके, जितने भी यहाँ पर आते हैं हम उतने का बना लेते हैं. These are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. So we can add just another one. Let me make a complete molecule for you guys. Okay. Now this is a 12 carbon acid for you. If you can notice ये हमारे पास एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, करेक्ट. और अगर हमें कोई मॉलिक्यूल बनाना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसके साथ अटैचमेंट शो करनी है अल्कोहल की है, इसके साथ अटैचमेंट शो करनी है ग्लिसरॉल की, तो मुझे एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर भी ड्रॉ करना पड़ेगा. तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक तो स्पेस कंज्यूमिंग होता है पूरा डिस्प्लेड फॉर्मूला, पूरा डिस्प्लेड स्ट्रक्चर बनाना. सो इंस्टेड व्हाट वी यूज इज स्केलेटल फॉर्मूलाज. ठीक है, एंड स्केलेटल फॉर्मूला क्या होता है? इट्स दिस. So this is your lauric acid. Now lauric acid has 12 carbons in it. And इसका जो skeletal formula है, let my screen be visible to you guys. Yep. Now, इसका अगर हम structural formula देखें, जिसके structural formula में what we can see is that every peak, every single peak is one carbon atom. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and then this 11th carbon is attached to this 12th COOH वाला carbon, जो कि हमारा functional group carbon है. This is our functional group carbon. Now, over here, if you could observe one thing, हमारे पास खाली हमने CH3 ड्रॉ किया है और हमने क्या ड्रॉ किया हुआ है? COOH completely शो किया हुआ है. हमने सारे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं वो नहीं शो किए हुए. क्या इसका मतलब है कि ये कार्बन जो हैं वो आपस में बॉन्डेड नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल बॉन्डेड है. यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है. दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू बेसिकली टू हाइड्रोजन्स अबव, one carbon over here and then bonded to the other carbon. But हमारे पास हम कभी भी जो normal CH bonds है ना, because हर organic molecule में, हर organic compound में, हर हाइड्रोकार्बन में it is understood कि कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा होता है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, right? So we do not show the normal, the usual CH bonds in a skeletal formula. We do not write carbon and hydrogen until and unless they are in a group. So यहाँ पर ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास मेरा मेथिल ग्रुप है. ठीक है, ये मेरे पास मेरा कार्बोक्सिल ग्रुप है. So because this is not a usual CH or not a usual hydrocarbon bond, I am not showing that. I am showing CH3 and COOH. Why? Because they are not my normal CH bonds. Correct? तो हमारे पास skeletal formula में हम क्या करते हैं? For example, if I have to draw the skeletal formula of an 8 carbon acid, तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले 1, this is my first carbon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these are basically my 8 carbon atoms. ठीक है, मैं जो ये peaks बनाऊंगी, ये मेरे जो peaks होती हैं, they are basically your carbon atoms. Okay, now let's connect them. So this carbon over here is connected to this other carbon. जैसे कि ये दो carbons आपस में connected हैं. Then this carbon further connects to this.
this, this, एंड ओवर हियर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि जो ये वाला कार्बन है, इट इज देन कनेक्टेड to your COOH group. So let's count the number of carbons over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then this seventh carbon is connected to this eighth carbon, which is the carbon of your carboxyl group. Now over here, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है. Hydrogen is also present here, here, here. एंड नाउ ओवर हियर, ये हमारे पास कार्बन है, ये खाली एक बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है विद दिस अदर कार्बन, जिसके ऊपर की तरफ कार्बन है, ये उसके साथ बस बॉन्ड बना रहा है, राइट. और जो ये कार्बन है, इसकी अपनी खुद की जो वो है, क्या कहते हैं, बॉन्ड है, उसको कितनी चीजों के साथ बॉन्ड बनाना होता है, 4 चीजों के साथ बॉन्ड बनाना होता है, या 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं. So it's only forming one bond over here. So the rest of the bond, it is forming with what? It is forming with your hydrogen. तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक मेथिल ग्रुप होगा CH3 का, इसलिए हम एक CH3 स्पेसिफाई कर देंगे. बाकी for the rest of it, we won't be writing all of this. और ये हमारे पास हमारा skeletal formula होगा. So is it clear how to understand or how to draw a skeletal formula? Any questions about it? Okay. Now, हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल, ये तो मेरे सारे मैंने क्या बनाए हैं, मैंने यहाँ पर सैचुरेटेड चीजें आपको दिखाई हैं, करेक्ट. अब अगर मेरे पास डबल बॉन्ड होता तो क्या हो जाता, इफ यू कुड सी, ये मेरे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है. दिस एंटायर थिंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एंड इफ यू कुड सी, हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन है, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लीनियर पैटर्न में है, राइट. तो जब तक हमारे पास हमारे हाइड्रोकार्बन्स एक लीनियर पैटर्न में होते हैं, वो कब होते हैं, जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, राइट. हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, तब हमारे पास वो एक लीनियर पैटर्न शो कर रहा होता है. बट फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास एक तो अनसैचुरेटेड स्पीशी हो गई. एंड बिकॉज हमारे पास हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जो ये पूरी फैटी एसिड चेन है, उसमें क्या है, उसमें सिर्फ एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास एक मोनो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, या मोनो अनसैचुरेटेड एसिड हो गया. सो नाउ इफ यू कुड नोटिस द पॉइंट वेयर अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यहाँ पर एक बेंड आ गया है. ये यूं स्ट्रेट होने के बजाय देयर इज अ बेंड. उसकी वजह यह है कि हमारे पास जब भी डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो जो ये बेंड होता है, इसको हम बुलाते हैं किंक. एंड व्हाई इज इट हैपनिंग, क्योंकि हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसमें कार्बन इस तरह से ग्रुपिंग करता है. हमारे पास एक जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो थोड़ा सा हमारे पास यू कैन से थोड़ा सा उस स्ट्रक्चर को, the exact word I'm forgetting, sorry, but next class में I'll discuss that. But you can understand कि जब ये डबल बॉन्ड होता है ना, उसकी ओरिएंटेशन के लिए या उसको प्रॉपरली एसोसिएट, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये कार्बन है, ये वाला, ये इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, लेकिन ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक ये स्पीशी अटैच्ड है और एक पूरी ये स्पीशी अटैच्ड है, करेक्ट. और जो दूसरा कार्बन है, इसके साथ एक ये स्पीशी अटैच्ड है और ये स्पीशी अटैच्ड है. सो नाउ इफ आई वुड ड्रॉ दिस सेपरेटली, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा. I have 2 carbons with a double bond, okay, and then both of them are attached to 2 groups. और वो ग्रुप्स क्या हैं, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, and this is basically 1 2 3 4 5 6 C6 H9 and O2. इसके साथ ये ग्रुप पूरा अटैच्ड है, और इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, C2H5. सो नाउ बेसिकली हमारे पास जो ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये इन 2 कार्बन के साथ फॉर्म हो रहा है, एंड दिस कार्बन
is basically bonded to this whole giant group and this carbon has its own group. तो इन दोनों को इस तरह से बॉन्ड करना होता है कि इसका ग्रुप और इसका ग्रुप भी आपस में प्रॉपरली ओरिएंटेशन हो सके. तो एक तरह से बिकॉज इतना बड़ा ग्रुप इन दोनों के साथ इंडिविजुअली अटैच्ड है, यानी दिस कार्बन एंड दिस कार्बन जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इसके साथ एक C2H5 का ग्रुप है, इसके साथ एक C6H9O2 का ग्रुप है. सो दे हैव टू एक्सपैंड या एक तरह से इस तरह फैलाकर इनको अपना ओरिएंटेशन करनी होती है. So that is why there is this kink, there is this bend developing. ठीक है, तो हमारे पास इस वजह से एक बेंड आ जाता है हमारे हाइड्रोकार्बन चेन में, and that is the sole reason why double bonds make fatty acids or lipids melt more easily. Why? क्योंकि if you could notice, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, और अगर ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का या एक सैचुरेटेड लिपिड है या एक सैचुरेटेड फैट है, तो इसकी जो पैकेजिंग है ये बहुत क्लोजली पैक्ड है, राइट? The interactions, basically the interactions which are holding together this entire molecule together, they are very close to one another. On the contrary, हमारे पास जो हमारा अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है या जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है वो बेंड हो रहा है. इस बेंडिंग की वजह से उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटरैक्शंस हैं which are holding them together, वो थोड़ी सी वीक है. यहाँ पर हमारे पास बहुत क्लोज पैकेजिंग है. ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पर हमारी जो पैकेजिंग है वो इस पॉइंट पर आके थोड़ी सी डिसरप्ट हो रही है, वो इतनी क्लोजली इंटैक्ट नहीं है. इस वजह से बिकॉज अनसैचुरेटेड fatty acids or unsaturated lipids do not have a very compact or a closely packed arrangement between their molecules. That is why unsaturated fatty acids melt easily due to the presence of the double bond. Why? Because double bond की वजह से जो packaging है वो affect हो रही होती है, correct? On the contrary, our saturated fatty acids, because they are closely packed, they do not melt easily. They do not melt easily. So ये हमारे पास solid होते हैं at room temperature, और ये हमारे पास liquids जिनको हम oils ये कहते हैं वो होते हैं at room temperature. So all the oils that you see, जो भी आप यूज कर रहे होते हो वो ज्यादातर क्या होते हैं, वो unsaturated lipids होते हैं. So is this clear so far? Any questions about it? Okay, now moving on. अच्छा, अब यहाँ पर भी देखो जिस तरह से हमें ये बेंड हमारे पूरे डिस्प्लेड फॉर्मूला में नजर आ रहा है, अगर हम वही स्केलेटल फॉर्मूला में देखें, सो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर दिस इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड. व्हाई? बिकॉज हमारे पास यहाँ पर एक तो कोई डबल बॉन्ड नहीं, जब भी कभी कोई डबल बॉन्ड होगा ना तो वो शो कर रहा होगा, बिकॉज जो ये लाइंस है, दीज लाइंस, दे आर एक्चुअली शोइंग वन सिंगल बॉन्ड, कि ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्डेड है बाय अ सिंगल बॉन्ड. और अगर यही हमारे पास एक डबल बॉन्ड में बॉन्डेड होते तो मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करती, आई वुड हैव रिप्रेजेंटेड इट लाइक दिस. I would have shown two lines telling me that there is a double bond between these two carbon atoms. तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स हैं और लीनियर स्ट्रक्चर है, सो आई कैन से कि मेरे पास यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं. ठीक है, सब्सिक्वेंटली ये तो ऊपर की जो जितने भी चारों हैं ये हमारे पास सैचुरेटेड है. Why? Because there is no kink, there is no bend, there is no double bond between the carbon atoms. लेकिन अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, सो लुक हाउ दे आर शोन. यहाँ पर एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. व्हाई? बिकॉज पूरी चेन में खाली एक डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का. नाउ दिस इज अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. जो आपका अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, इट इज अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. व्हाई? बिकॉज 1 and then 2 and then 3. You have 3 carbon-carbon double bonds present in this molecule, so it is a polyunsaturated fatty acid. Subsequently, यहाँ पे भी हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स है, तो ये भी हमारे पास पॉलीअनसैचुरेटेड है. ऑन द कॉन्ट्री, ओलिक में खाली एक डबल बॉन्ड हमें नजर आ रहा है, तो ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट योर skeletal formulas and your fatty acids.